Yes, today we are going to study about the transcription unit. Then, before studying that, we should know about what is the central dogma of the gene expression. We know that the Watson and Crick, especially the Crick proposed the central dogma, which is universally accepted as well as the classical central dogma. This is the unidirectional genetic flow or flow of genetic information that is known as the central dogma. According to this Crick, the central dogma process, it involves the two important types of the processes, that is transcription and translation, which is required for the expression of the gene present in DNA. And these two important processes are the transcription and the translation. Through the transcription process, the genetic information present in DNA, it is transferred into the RNA, that is the mRNA, and this mRNA, it bears the genetic codon in the form of triplet codes. What is meant by these triplet codes we will study in the next point, that is the genetic codon point. And the genetic codon present on messenger RNA are used for the formation of the protein or the peptide. And this process is known as the translation. Means the genetic codon, it is translated, the genetic information from DNA, it is present in RNA, it is translated in the form of the protein, that is the central dogma process. And according to the Crick, it is unidirectional. But we know that the Temin and Baltimore, they discovered the reverse transcription process in which the mRNA, that is the especially the messenger RNA present in the viruses in the form of their genetic material, the synthesis of DNA from RNA, that is known as reverse transcription. And this reverse transcription, it was discovered by Temin and Baltimore while studying on the cancer-causing virus, that is the sarcoma virus. And therefore, this reverse transcription process, it is also known as the Taminism. Hope you know about this. That is known as Taminism. Now, DNA, it forms its own identical copy by the process of the DNA replication or DNA duplication. Now, this central dogma, it includes the transcription and the translation process for the transfer of genetic information from DNA for the synthesis of the protein. Directly, we can say that the expression of the gene in the form of protein, it involves transcription and translation process. And this is the central dogma of the gene expression. Now, this is the basic point. Now, let us discuss about what is meant by the transcription unit. अब ट्रांसक्रिप्शन यूनिट क्या होता है इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं. So let us discuss about the transcription unit. Then transcription unit means the sequence of the gene that involved in the transcription process, that is known as the transcription unit. We know that during the transcription process के समय क्या होता है, the template DNA, it is always present in the form of 3' to 5' end. The template DNA for the transcription or the parent DNA for the transcription is that DNA which is in the direction of 3' to 5' direction. That is known as the template DNA or parent DNA that involved in the transcription process. Then, now let us consider this gene sequence. Now, this TACGCCAT, this is the gene sequence. Okay, this is the gene sequence which is present in 3' to 5' region, and that is the template DNA. This template DNA, it undergoes transcription and produces the complementary single-stranded messenger RNA. And this single-stranded messenger RNA, it has the identical sequence with the complementary DNA of the template DNA. Then, what is this? Now, the sequence of the gene
present in template DNA from 3 to 5 to 5 end or 3 to 5 direction, it is transcribed into its complementary sequence in the form of messenger RNA. That is known as the transcription process. Okay, we can define the transcription as, what is meant by transcription? The transcription is the transfer of genetic information present in DNA in the form of messenger RNA is known as the transcription. Now, the messenger RNA produced, it is complementary with the parental template DNA, but it is identical with the complementary DNA of the parent DNA or the template DNA. This one is the template DNA, and this strand is the complementary strand of the template DNA, and the messenger RNA produced from the parental DNA is identical with the that is identical with the complementary strand of the template DNA. But what is difference here? The difference is in T is always replaced with the U. T is replaced with the uracil. That is the difference. While other remaining nucleotides, that is adenosine, guanosine, cytosine, their sequence is present as it is, except the thymidine. Thymidine is replaced by the uracil. That is the difference during the transcription that's occurring. तो ये था ट्रांसक्रिप्शन के बारे में. तो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट क्या होता है, इसे हमें जानना होगा. अब एक पॉइंट यहाँ पर ऐसा है कि ये जो ट्रांसक्रिप्शन के बाद जो मैसेंजर आरएनए फॉर्म होता है, वो ट्रांसलेशन में जाकर with the help of transfer RNA, ribosomal RNA, okay, with the help of the ribosomes, it form this messenger RNA. It undergo the translation process and it form the peptide or the polypeptide chain. Okay, and this polypeptide chain, it is the amino acid chain that contain the different amino acid, and this amino acid, it is added with respect to these triplet codon sequences present on messenger RNA. These triplet codon sequences present in messenger RNA, they are translated into the amino acid. Now this is the language of the protein synthesis for adding the amino acid during translation. And the codon which is present on messenger RNA for these amino acid transfer, it is present on the messenger RNA in the form of triplet codon. तो ये एक शॉर्ट व्यू है जो जीन एक्सप्रेशन के लिए हमने आपको यहाँ बताया है. सो नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज द ट्रांसक्रिप्शन यूनिट. तो ये ट्रांसक्रिप्शन यूनिट क्या होता है? व्हाट इज मीन बाय ट्रांसक्रिप्शन यूनिट? ट्रांसक्रिप्शन यूनिट, the sequence of the gene that involved in the regulation of the transcription process is known as the transcription unit. There are three important gene sequences that involved in regulation of transcription, and these three are the promoter, the structural gene, and the terminator gene. Now let us study one by one. What is meant by promoter? Promoter, अब एक यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, वो पॉइंट्स आपको बताने बहुत ही जरूरी है. वो क्या है? नाउ एज आई टोल्ड यू, this 3' to 5' end, that is the template DNA strand, and the complementary strand for the template DNA strand is known as the coding strand. इस बात को हमेशा याद रखना, ये नीट में पूछा गया सवाल भी है. ओके, सो व्हाट इज मीन बाय टेम्पलेट स्ट्रैंड? The 3' to 5' strand that involved in the synthesis of the complementary messenger RNA, okay, or the messenger RNA which is produced on the DNA strand, that strand is known as the template DNA strand, and messenger RNA produced on the template DNA strand is always complementary. तो मैसेंजर आरएनए जो प्रोड्यूस होता है टेम्पलेट डीएनए पर, वो हमेशा टेम्पलेट डीएनए के कॉम्प्लीमेंट्री होता है. इस बात को आपने ध्यान रखना है. देन और जो कोडिंग स्ट्रैंड होती है, दिस कोडिंग स्ट्रैंड इट इज कॉम्प्लीमेंट्री टू द टेम्पलेट डीएनए स्ट्रैंड. इसका मतलब ये है
कि जो मैसेंजर आरएनए इस टेम्पलेट स्ट्रैंड को जो कॉम्प्लीमेंट्री फॉर्म हो रही है, तो कोडिंग स्ट्रैंड जो कॉम्प्लीमेंट्री है टेम्पलेट स्ट्रैंड के, इसका मतलब कोडिंग स्ट्रैंड और मैसेंजर आरएनए इन दोनों का जो सीक्वेंस होगा वो आइडेंटिकल होगा। तो चलिए अगला पॉइंट, कुछ और यहाँ पर इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स दिए गए हैं, उन सिनोनिम्स के बारे में भी जानेंगे। दिस टेम्पलेट डीएनए स्ट्रैंड एंड कोडिंग स्ट्रैंड, what are the different synonyms for these two? This coding strand, it is also known as the non-template DNA. Non-template DNA, it is also known as, इसे हम और एक वर्ड इस्तेमाल करते हैं, it is also known as, that is the sense DNA strand, that is known as the sense DNA strand. It is also known as, इसे हम sense DNA strand कहते हैं, it is also known as the positive strand. इसे पॉजिटिव स्ट्रैंड भी कहा जाता है। ओके, तो टेम्पलेट डीएनए को क्या कहा जाएगा? टेम्पलेट डीएनए को कहा जाएगा दैट इज द टेम्पलेट डीएनए, और सेंस नहीं, उसे नॉन सेंस नहीं कहेंगे, दैट इज एंटी सेंस कहेंगे, और निगेटिव स्ट्रैंड कहेंगे। तो दीज आर द सिनोनिम्स कैन बी यूज इन एमसीक्यू। तो इन बातों को ध्यान में रखना है। Now, कभी अगर पूछा गया which strand is used as the reference for indicating the location of promoter gene sequence, structural gene sequence and terminator gene sequence, तब इसका जवाब होगा the reference strand which is used for the location of or indicating the location of promoter, structural and terminator gene. That strand is the coding strand. Coding strand which is considered in the 5' to 3' direction, it is considered as the reference strand for the identifying the location of promoter, structural and terminator gene. So let us discuss about the three different regulation transcription units. सबसे पहला promoter. What is meant by promoter? तो इन तीनों जो यूनिट है, प्रमोटर, स्ट्रक्चरल जीन एंड टर्मिनेटर जीन, इन तीनों के बारे में हमें क्या क्या बातें याद में रखनी है? सबसे पहले तो इनकी पोजीशन, their position where they are situated with reference to the coding strand polarity where they are present on DNA. Second point, what is their function? इनका फंक्शन क्या होता है? तो ये दो पॉइंट हमेशा पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला होता है प्रमोटर जीन सीक्वेंस। तो प्रमोटर जीन सीक्वेंस, इट इज प्रेजेंट 5' रीजन ऑफ द कोडिंग स्ट्रैंड। तो 5' रीजन पर जो सीक्वेंस होता है वो प्रमोटर जीन सीक्वेंस होता है। एक बात आपको बता दें, कभी कभी एक बार वर्ड इस्तेमाल किया गया है अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम। अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम, what is meant by upstream and downstream? Upstream, it is the nucleotide sequence. Upstream, it is the nucleotide sequence which is present on the 5' region from the starting point of the transcription. जहां पर स्टार्ट साइट है ट्रांसक्रिप्शन की, उस ट्रांसक्रिप्शन के स्टार्ट साइट से जो 5' रीजन है, उस 5' रीजन पर जो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है उसे हम अपस्ट्रीम रीजन कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? अपस्ट्रीम रीजन कहते हैं। और वही ट्रांसक्रिप्शन साइट से 3' रीजन पर जो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है उसे हम डाउनस्ट्रीम रीजन कहते हैं। बच्चों, ये सवाल कई बार पूछा गया है, इसे हमेशा याद रखना है। इसे हम डाउनस्ट्रीम रीजन कहते हैं। ओके, upstream and downstream region. Hope you understand this point. ठीक है। So upstream region यानी promoter site जो है, that is it is present on situated on the upstream side. Means 5' region जो है starting site से जो 5' region की ओर का जो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है, okay, with reference to this coding strand, उसे हम कहते हैं upstream region। और वही स्टार्ट साइट से 3' की ओर जो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है उसे हम कहते हैं डाउनस्ट्रीम रीजन। तो अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम रीजन, ये याद रखना।
तो चलिए पहला पॉइंट, प्रमोटर जीन सीक्वेंस इट इज प्रेजेंट ऑन द अपस्ट्रीम रीजन। ये क्वेश्चन पूछा गया है, याद रखना। while structural gene and terminator gene they are present on downstream region। ये हमेशा पूछा गया सवाल है। then promoter gene it is present on the nucleotide sequence present in the promoter gene sequence, it is rich in TNA, that is thymidine and that is adenine. Thymidine and adenine nucleotide sequence rich sequences present in promoter region. Therefore, this promoter region it is also known as the Tata box. इसे टाटा बॉक्स कहा जाता है because this promoter gene sequence it is rich in the nucleotide sequence that is TA or AT. Therefore, it is known as Tata box. But in case of prokaryotes, this Tata box were discovered by the Pribnow, the name of the scientist, that is the Pribnow. Therefore, in case of prokaryotes, this Tata box is known as the Pribnow box. इस टाटा बॉक्स को प्रोकैरियोटिक प्रमोटर के लिए प्रिब्नो बॉक्स कहा जाता है। कभी पूछा जाए तो याद रखना। Then, what is its function? प्रमोटर जीन सीक्वेंस का फंक्शन क्या है? तो प्रमोटर जीन इट इज सिचुएटेड ऑन -10 to -20 न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस फ्रॉम द स्टार्ट साइट। अगर ये स्टार्ट साइज है, सपोज आपको पता है जो नंबर लाइन होती है, नंबर लाइन में एक 0 पॉइंट होता है, उसके राइट में सारे ही +1 +2 +3 ऐसे नंबर होते हैं, इंटीजर्स होते हैं, और उसी 0 के लेफ्ट में जो इंटीजर्स होते हैं वो -1 -2 -3 ऐसा लिखा जाता है। तो दिस इज द स्टार्टिंग साइड, और स्टार्टिंग साइड से 5' अपस्ट्रीम रीजन पर जो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस होते हैं उन्हें निगेटिव दिखाना होता है, ताकि ये समझ में आ जाए दिस निगेटिव नंबर इंडिकेट द अपस्ट्रीम रीजन। याद रखना, ये कभी पूछा गया तो इस क्वेश्चन का जवाब आपको आना चाहिए। तो प्रमोटर इट इज द बाइंडिंग साइट ऑफ RNA polymerase enzyme. RNA polymerase enzyme it binds at the that is promoter region, and it slide over the slide over the DNA and comes to the start site। इस बात को ध्यान में रखना है। तो प्रमोटर रीजन पर आरएनए पॉलीमरेज बाइंड होता है, और ये जो स्टार्टिंग साइट है, इस स्टार्टिंग साइट पर से ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होता है। ठीक है, तो चलिए सेकेंड वन, द स्ट्रक्चरल जीन। व्हाट इज मीन बाय स्ट्रक्चरल जीन? The nucleotide sequence of the template DNA that contain the genetic information for the particular gene for the synthesis of particular protein or enzyme, that gene is known as the structural gene। और इस structural gene से हमेशा this structural gene it produces either ribosomal RNA, tRNA और मैसेंजर RNA। इन तीनों में से किसी भी टाइप के आरएनए को सिंथेसाइज करने के लिए ये स्ट्रक्चरल जीन हो सकता है। दैट कंटेन द इंफॉर्मेशन ऑफ द जीन, जेनेटिक इंफॉर्मेशन व्हिच इज प्रेजेंट इन द टेम्पलेट डीएनए स्ट्रैंड इज नोन एज द स्ट्रक्चरल जीन। नो डाउट इट इज सिचुएटेड इन डाउनस्ट्रीम रीजन। देन नेक्स्ट वन, टर्मिनेटर जीन सीक्वेंस। द टर्मिनेटर जीन सीक्वेंस it is the gene sequence where the transcription process it ends, that is known as the terminator site। terminator site ये वो साइट होती है जहां पर टर्मिनेशन प्रोसेस स्टॉप होता है, उसे हम टर्मिनेटर जीन सीक्वेंस कहते हैं। तो ये था ट्रांसक्रिप्शन यूनिट के बारे में। ओके, तो एक सवाल ऐसा आता है, ट्रांसक्रिप्शन जो प्रोसेस होता है क्या वो इन दोनों भी डीएनए स्ट्रैंड पर एक साथ होता है? ओके, वेदर दीज बोथ द स्ट्रैंड दे आर इन्वॉल्व इन ट्रांसक्रिप्शन एट द सेम टाइम? तो आंसर होता है नो। व्हाई द ट्रांसक्रिप्शन ऑफ both the gene, both the strand, template strand as well as coding strand do not happen?
क्यों नहीं होता है ये? अगर सपोज ये होता तो क्या होता? तब क्लियर, अगर ये होता तो क्या होता? अगर ये होता तो इस स्ट्रक्चरल जीन पर जो जीन सीक्वेंस है, ओके, वो कोडिंग स्ट्रैंड पर उसके कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस होते हैं। तो इस स्ट्रक्चर, इस टेम्पलेट डीएनए से जो मैसेंजर आरएनए बनेगा, जो भी आरएनए बनेगा, और कोडिंग स्ट्रैंड से जो भी आरएनए बनेगा, वो भी एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होंगे। और फिर कॉम्प्लीमेंट्री होने के कारण हमें पता है जहां पर न्यूक्लियोटाइड कॉम्प्लीमेंट्री एक दूसरे को मिल जाते हैं, वो एक दूसरे के साथ कॉम्प्लीमेंट्री बेस पर फॉर्म करते हैं। फिर इस वजह से दोनों भी स्ट्रैंड एक साथ ट्रांसक्रिप्शन अगर करेंगे तो बेटा उनका जो रिजल्ट आएगा, आरएनए बनेगा, वो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होने के कारण एक दूसरे के साथ बाइंड हो जाएंगे। इसीलिए both the strand do not transcribe at the same time। और दूसरा क्या होता है इसके बाद, नेक्स्ट वन क्या होता है? इसके बाद ये होता है कि why this both the strand do not transcribe at the same time। वो ऐसे कि इस टेम्पलेट डीएनए पर जो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है और कोडिंग स्ट्रैंड पर जो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है, इन दोनों से जो मैसेंजर, इन दोनों से जो कोडिंग, इन दोनों से जो कोडॉन बनने वाले हैं प्रोटीन सिंथेसिस के लिए, वो एक दूसरे के बहुत ही अलग होंगे और बहुत ही डिफरेंट होंगे। ओके, और ऐसा नहीं होगा। ओके, तो एक ही जीन होगा जो एक स्पेसिफिक प्रोटीन सिंथेसिस करेगा, या तो वो टेम्पलेट डीएनए या फिर कोडिंग। ओके, दोनों भी अगर ट्रांसक्राइब करेंगे तो दोनों भी डिफरेंट तरह के प्रोटीन सिंथेसाइज करेंगे। तो इसी वजह से दोनों भी स्ट्रैंड, टेम्पलेट डीएनए और कोडिंग स्ट्रैंड, दे डू नॉट ट्रांसक्राइब एट द सेम टाइम। ओके, तो देखिए सपोज यहाँ पर ये जीन सीक्वेंस है। अगर चलिए अब थोड़ा सा यहाँ पर एक्सरसाइज कर लेते हैं। तो 3' to 5' रीजन पर सपोज ये टेम्पलेट स्ट्रैंड पर ये स्ट्रक्चरल जीन सीक्वेंस है। ओके, ATGC 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 वगैरह 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 वगैरह, ठीक है। तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री जीन सीक्वेंस 5' पर है, TACG 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 5' to 3', ठीक है। Then this one is the 3' to 5' is the template strand and 5' to 3' is the coding strand। Okay, so अगर हम आपसे सवाल पूछना चाहेंगे कि what is the product of this ATGC template DNA strand, इस टेम्पलेट डीएनए स्ट्रैंड का प्रोडक्ट क्या होता है? इस टेम्पलेट डीएनए का जो प्रोडक्ट होता है वो 5' to 3' रीजन पर क्या होता है? 5' to 3' रीजन पर ये सिंथेसिस होता है, दैट इज T is replaced by U, ठीक है। UACG 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 वगैरह वगैरह, ठीक है। तो ये UACG 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 ऐसे बनेगा। ओके, तो ये UACG मीन्स टेम्पलेट स्ट्रैंड से जो मैसेंजर आरएनए बनेगा वो कोडिंग स्ट्रैंड का आइडेंटिकल होगा और उसमें टी रिप्लेस होगा यूरासिल से, इतना ही वहां पर डिफरेंस होगा। तो इस बात को ध्यान रखना है। तो यहाँ पर हमने ट्रांसक्रिप्शन यूनिट जो है, दैट इज ट्रांसक्रिप्शन यूनिट हमने कंप्लीट किया। तो अगला पॉइंट आता है दैट इज द जेनेटिक कोडॉन। चलिए उसे स्टार्ट करने से पहले आपके अगर कोई सवाल है तो यू कैन आस्क योर क्वेश्चन।